Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We are starting the second episode, and we give all honor, all glory, and all thanks to our Lord and Savior Jesus Christ. समय हम दूसरे एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं और हम सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु की मीटिंग जो है वो परमेश्वर के दास ने जो बोला हुआ है मैं आपको दे रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा जहाँ पर मौजूद है और बड़े कार्य करने वाला है, और इस टीचिंग के द्वारा आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आप आशीष को ग्रहण करने पाएंगे, अपनी लाइफ में बड़े कामों को होता हुआ देखने पाएंगे। पिता परमेश्वर इनकी जिंदगी सेम ना रहे, प्रभु यीशु मसीह के समर्पित नाम। आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। We are starting the second episode, and we give all honor, all glory, and all thanks to our Lord and Savior Jesus Christ. समय हम दूसरे एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं और हम सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। As you have already seen in the first episode with the certain slides, that we are supposed to tarry. A group of people have to tarry, and then only we have to start the church. Glory to God. We just cannot start the church immediately. जैसे हमने पहले एपिसोड में देखा कि हम लोग जो है हमें एक लोग झुंड होकर हमें रुकना पड़ता है, जब और लोग जुड़ते हैं तभी हम कलीसिया की शुरुआत कर सकते हैं। As I told you, it is not one man show. It is a group. You know, the mission ministry of a group of people, not the one man, not only one family. It is a group of people have to join together and then start a church, but till they receive the anointing of the Holy Spirit. Now we are going to start with this second episode. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. और ये किसी भी एक व्यक्ति का कार्यक्रम या एक परिवार का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उन्हें रुकना पड़ता है जब तक उन्हें अभिषेक नहीं मिलता और लोग उनके साथ नहीं जुड़ते, और फिर उन्हें इकट्ठे होकर कलीसिया की शुरुआत करनी पड़ती है। Yes, they have to join together and start the congregation. Episode number 2. That is the first century church model. और ये दूसरा एपिसोड है जो कि पहले सदी की कलीसिया का व्यवस्था, उसके बारे में हम बात करेंगे। As in the first episode we have seen, Jesus Christ has spoken while he was on this earth planet that I'm going to give you another comforter, another helper. That is, he has called it as the Spirit of the truth, and that is also the Holy Spirit, which the disciple had not received till then. But then when 120 people were sitting in upper chamber and they were tarrying, they were fasting and praying, and on the day of Pentecost, that is the Pentecostal day, on that day they were anointed with the Holy Spirit. So the first church in this earth planet, after crucifixion of Jesus Christ, after his 40 days of dwelling on this earth planet, after he was ascended up in the heaven, the first century church was established on the day of Pentecost, which is called the Pentecostal church. Glory to God. At that time, no other denominations were there. First churches were the Pentecostal church. Glory to God. Hallelujah. और हम देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह कहाँ
कि मैं तुम्हें अकेला तन्हा excuse me, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हें दूसरा सहायक भेजूंगा जो तुम्हें दिलासा देगा, और उसका नाम, यीशु मसीह ने कहा, उसका नाम पवित्र आत्मा है। और तब तक किसी को पवित्र आत्मा मिला नहीं था। और फिर यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठाए गए, तब यीशु 120 जो यीशु मसीह के चेले थे, वह ऊपरी कमरे में वे बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, रुके हुए थे पवित्र आत्मा के लिए। तब पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, और फिर तभी पहली कलीसिया का निर्माण हुआ। और उसके पहले किसी भी प्रकार का ये धर्मीय मजहब नहीं था, और केवल एक ही कलीसिया थी जो कि पवित्र आत्मा के आने से तैयार हो गई थी। And as I already told you in my testimony, you must see my testimony, where I've already mentioned that none of the disciples have ever uttered the word religion. Jesus never spoke the word religion from his mouth. So Jesus never came to form a separate religion. But then all the followers, the disciples, because in the first century they were increasing in multitudes. That is why, for the census purpose, for the first time in a place called Antioch, they were called as Christian community. But Jesus never formed a religion. But now let us understand that the church which was established in the first century was on the day of Pentecost, which is called the Pentecostal day. Let us understand the meaning of the Pentecostal day. And then when they received the Holy Spirit, then the people could see that they were talking their own language. People, those who were assembled there, it was in a marketplace, those who were Greek, they were able to hear the language which they were speaking, unknown tongue. Someone was speaking Greek and they were able to understand. People of Hebrew, they were able to understand. They are speaking Hebrew. All diverse tongue they were speaking, as people thought that as if they are drunk. But then no, they were having the sign of the Holy Spirit with the speaking in tongues. So that is the day of the Pentecostal day. Glory to God. Hallelujah. और हम देखते हैं कि इसके पहले किसी को पवित्र आत्मा मिला नहीं था, और जब पवित्र आत्मा मिला तब पहली कलीसिया का निर्माण हुआ। और मैंने अपने गवाही के समय में बताया था कि शिष्यों ने कभी भी धर्म या मसीह ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, इसका कभी भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और पहली बार जब मसीह ये शब्द इस्तेमाल हुआ था, वह अंतकिया नाम की एक जगह पर उसका इस्तेमाल हुआ, और वह भी इसलिए क्योंकि जो यीशु मसीह के चेले थे उनकी तादाद बढ़ रही थी, और उन्हें पहचानने के लिए, उनके एक श्रेणी बनाने के लिए जनगणना में उनका नाम मसीह लोगों के रूप में उन्हें दे दिया। लेकिन यीशु मसीह खुद किसी धर्म की स्थापना, किसी संप्रदाय की स्थापना के लिए नहीं आए थे, वे केवल मनुष्य जाति के उद्धार के लिए आए थे। ये मैंने आपको गवाही के समय में बताया था। और फिर जब पवित्र आत्मा उंडेला गया चेलों पर, तब ऐसे हुआ था कि वहां पर आजू बाजू चारों ओर जो लोग थे, उन्हें अपनी अपनी भाषा में उनकी बातें सुनने मिली। जैसे कोई यूनानी था तो यूनानी भाषा में उसे समाचार सुनने मिला, और कोई इब्रानी था तो उसे इब्रानी भाषा में सुनाई दे रहा था। और तब ऐसी इस तरह से जो है कलीसिया की स्थापना हुई थी। And we read there that the earth was shaken, that there was an earthquake kind of experience, and then they could see the miracle happening. So when the church was established with the gifts of the Holy Spirit, people could see, the people talking in tongue, and people could understand their own respective languages, and they could see the miracle happening. So it means in a church there should be the works of the Holy Spirit has to operate. The sign has to be operated. The miracle and wonders should be there in the church. That is called the Pentecostal church. That is called the full gospel Pentecostal churches, where the kingdom principle, the fulfillment of the kingdom principle, that is a full gospel is given to the congregation. That is called the Pentecostal church. Glory to God. Hallelujah. और पेंतकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा भेजा गया, पवित्र आत्मा उतर आया, तब बाइबल कहती है वहां पर भूकंप जैसा कुछ हुआ, वहां पर धरती हिली, और साथ ही साथ वहां पर चमत्कार होने लगे। और जब ऐसे चमत्कार होते हैं
तो ये बहुत जरूरी है कि ये दिखे, क्योंकि तभी वह एक पूर्णतः सुसमाचार से भरी हुई और पेंतेकुस्त की एक कलीसिया के रूप में जानी जाएगी। Now let us understand, if someone of you have fulfilled the kingdom principle, I will teach you what is the meaning of the kingdom principle. That is the kingdom principle as Jesus has spoken to Nicodemus, in the book of John, 3rd chapter, 3rd verse, and also book of John, 3rd chapter, 5th verse. I'll teach you separately what is the meaning of the kingdom principle. That means confessing our sin and to be born again. That is number one step. Number two step, after being born again, after receiving Jesus as a personal savior, people should not stop. They should go for the next step of taking water baptism and also getting the Holy Spirit anointing. This is called the full gospel. Taking water baptism, immersion baptism, as Jesus was also baptized in the river Jordan, fully immersed. Not like children baptism, just sprinkling some water. It is not mentioned in the Bible. Which is not in the Bible, we are not supposed to adopt that kind of culture. So here we have to learn the sound doctrine, the deeper truths of the Bible. Glory to God, hallelujah. Fulfilling all those things, the kingdom principle in accordance with the book of John, 3rd chapter, 3rd verse and the 5th verse. And now we, as the chosen children of God, are the fellow citizen of the kingdom of God. Glory to God, hallelujah. Then what is our responsibility as the church member, congregation member, as the member of the body of Christ, that is the congregation? What is our responsibility? Book of Acts, 1st chapter, 8th verse, that is our responsibility. और हम कलीसिया होने के नाते हमें बाइबल के पवित्र शास्त्र के जो सिद्धांत है उन्हें पूर्ण करना है, और वो मैं आपको सिखाऊंगा कि बाइबल के सिद्धांत क्या है जो कि यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहे थे यूहन्ना की पुस्तक में, कि वह ये सिद्धांत है कि पहले किसी का उद्धार हो जाए, वह यीशु मसीह का स्वीकार करे, फिर उसे पानी में डूबकर पानी में से बपतिस्मा लेना होगा, और फिर उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना जरूरी है। और ये पूर्ण सुसमाचार है। अगर ये पूर्ण नहीं होता तो ये अधूरा है। और जो बाइबल में जो है पानी में जिस तरह से यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था पानी में डुबाकर, वैसा बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है, और न कि जिस तरह से बच्चों पर पानी छिड़क कर उनका बपतिस्मा होता है। ये बाइबल में दिया गया नहीं है, बाइबल इसकी समर्थन भी नहीं करती। और हम कलीसिया होने के नाते हमें इन पूर्ण सिद्धांतों का हमें इनका पालन करना है, और हम इसके बारे में अब और गहराई में जो है हम सीखेंगे। Because the word of God says, repent, confess your sin and be baptized. So these are the things: repent, confess your sin and be baptized. We'll read all those things, study all those things in deeper. But a child who is born, even if he is dying, he will be in heaven only. There is no need of baptism. The sprinkle baptism is not required. Only dedication is just enough. Because a child cannot repent. Child cannot confess. Child, unless repent, confess, baptism is incomplete. And the baptism, how the model of baptism? Jesus himself was baptized in river Jordan when he was elder, not in the childhood. He did not come when he was childhood, 12 years old, though he was teaching in the temple and he was, debating with all the doctors of law, of those days law, the biblical law. He was debating with them, but that time he was not baptized. And Jesus told, as I did, you do the same thing. We are going to read, studying about this baptism, water baptism, and also the Holy Spirit baptism later. But now let us understand today in the second episode that now for the congregation members, we are the Holy Communion member and we are the member of the body of Christ. We all are added as a member of the body of Christ. That is called the church. As I told you, church is not the concrete building. The church is not, the big cross. It's not like that. The church means all the Holy Communion member having fellowship together, worshipping together, taking Holy Communion together. They are the member of the body of Christ. And then our responsibility is like Book of Acts, 1st chapter, 8th verse. What is that?
we have to witness till the ends of the earth. Important, ends of the earth. We have to share the gospel. We have to share our testimony to the ends of the earth, not only in one particular area, geographical area where you receive the salvation, not only in one particular district, not only one particular city, no, till the ends of the earth planet. For that purpose only the Holy Spirit anointing is given unto us. Book of Acts, 1st chapter, 8th verse. Hallelujah. This is the concept of the first century church model. और जब कोई बच्चा होता है वह पैदा होते ही उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसे बपतिस्मा देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाइबल के अनुसार सबसे पहले हमें पश्चाताप करना और पापों की कबूली करना ये बहुत जरूरी है। इसके बिना जो है हमारा उद्धार नहीं हो सकता, और ये कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता, ना वो पश्चाताप कर पाएगा, ना ही वह अपने पापों को कबूल करेगा। अगर वह मरता भी है तो वह सीधे स्वर्ग में जाएगा, तो उसे बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। अगर बपतिस्मा लेना है तो उस व्यक्ति को बड़ा होना जरूरी है। जिस तरह से यीशु मसीह जब वह परिपक्व थे, बड़े हो गए थे, तब वह यरदन में जाकर उन्होंने बपतिस्मा लिया। उस तरह से हमें बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, और ये हम इसके बारे में, पानी के बपतिस्मा के बारे में और आगे सीखने वाले हैं। लेकिन आज के दूसरे एपिसोड में जो है हम सीखने वाले हैं कलीसिया के, जो इस कलीसिया का हिस्सा है, हम लोग जो कलीसिया के सदस्य है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है, जो कि दी गई है प्रेरितों के पुस्तक के पहले अध्याय और वचन 8 में, जहां पर लिखा गया है कि बल्कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी, और यरूशलेम में समूचे यहूदिया और सामरिया में और धरती के छोरों तक तुम मेरे साक्षी बनोगे। वह कहता है कि हमें पृथ्वी के अंत तक, अलग अलग कोनों तक पहुंचना है सुसमाचार को लेकर, कि हमारे शहर में, ना हमारे किसी भौगोलिक छोटे से स्थान में, ना छोटे से जिले में, बल्कि पूरी पृथ्वी में हमें पहुंचना है सुसमाचार को लेकर। यरूशलेम की जिम्मेदारी है जिसे हम सीखेंगे आज। Jerusalem in the sense, in your congregation, in your church, you have to be a witness. You have to give your testimony. You have to witness. And in among other people, other people, Yehudia means among other people, and Samaria in the sense, in the marketplace, in among the Gentiles, among all the people, those who are in the worldly and carnal things are going on, all pleasures of the life, people are dwelling there. We have to be witness among them in area, like all dirty things are going on, godliness is not there, ungodly things are going on. We have to be witness there in that working place, in all such areas, and then till the ends of the earth planet. For that purpose God has anointed us with this anointing of the Holy Spirit. Glory to God. Hallelujah. और जब वो कहता है कि हमें यरूशलेम में पहले सुसमाचार का प्रचार करना है, इसका मतलब है कलीसिया में जो इकट्ठा होती है, उस कलीसिया में हमें वचन फैलाना है। और फिर जो है वह कहता है यहूदिया में जो कि दूसरे लोग हैं, बाहर के लोग हैं, उन तक हमें सुसमाचार पहुंचाना है। और फिर वह कहता है सामरिया, जो कि बात कर रहा है बाजार का जो जगह होती है, जहां पर काम किया जाता है, जहां पर गलत काम होते हैं, वहां पर जाकर सुसमाचार का प्रचार हमें करना है। और फिर वो कहता है पृथ्वी के छोरों तक, पृथ्वी के अंत तक हमें जाकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना होगा। As God gave me the grace to go to more than 120 countries, I was in my comfort zone. I was enjoying my all life, good life, high status, high position. I was in the comfort zone. But then, because this is the biblical teaching, this is the biblical doctrine, this is the full gospel kingdom principle, that we have to go to the ends of the earth planet. But first, we have to be a testimony, role model in our church. We have to be testimony in our own area, in our own district, in our own place also. And third, we have to be a testimony, witness among our own working area, working place, in the midst of all ungodliness. And then God is going to give us the opportunity to go to the ends of the earth planet and take this gospel of peace to the ends of the earth planet. This is the word of God, and this is the promise of God. In the congregation, none should be
without the anointing of the Holy Spirit. Number one step may be there, like they have confessed and then they have received Holy Spirit, they received Jesus in their heart as a personal Savior. Through crusade, they must have done it. Through other places, okay, they must have, by seeing the TV program, they have confessed, but then they should not stop with only the born again experience. This is called the born again experience. They should go for the second step. That is, the second step is, as book of John, 3rd chapter, 5th verse says, unless and until you are born of water, that is water baptism, and Holy Spirit, that is the fire baptism, Holy Spirit baptism, you cannot enter into the kingdom of God. This is the doctrine Jesus has spoken to Nicodemus, a very rich man, a man of power and authority. Like you can say he's the, like, police commissioner, or we can say he's a minister of defense kind of thing. That kind of, stature, Jesus has spoken to him very clearly, that we have to fulfill this kingdom principle. So now the word of God says, the promise is there, book of Acts, 2nd chapter, 17th verse, that it is a promise that God is going to give all such gifts, pour my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall see dreams. So this is the church. In the church, everyone should be anointed and should have the gifts of the Holy Spirit. Glory to God. Hallelujah. और जैसे डॉक्टर ने कहा कि वे पहले जो है बहुत ही आराम की अपने स्थान पर थे, बहुत खुश थे अपनी जिंदगी में, लेकिन परमेश्वर उन्हें 100 से भी अधिक देशों में ले गया सुसमाचार का प्रचार करते हुए। उसी तरह से हम लोग जब अपने कामों में होते हैं, अपनी काम की जगह पर हमें सुसमाचार का प्रचार करना है और लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाना है, और फिर परमेश्वर जो है हमें ले जाएगा पृथ्वी के अंत तक, जहां पर हम सुसमाचार का प्रचार करते रहेंगे। और ये जो है इसके भी आगे हमें बढ़ना है। लोग जो है पहले स्तर पर ही जैसे उनका उद्धार हो जाता है वहीं पर रुकते हैं, लेकिन वैसे नहीं करना है। यीशु मसीह ने जिस तरह से कहा, उद्धार के बाद बहुत जरूरी है कि हम पानी में डुबाकर बपतिस्मा हो जाए और फिर पवित्र आत्मा हमें मिले। और ये बात यीशु मसीह ने कही थी निकोदेमुस को, जो कि एक बहुत ही सामर्थी और बड़ी हस्ती था और एक बड़े ओहदे पर वो था, उससे यीशु मसीह ने ये कहा था। तो ये बहुत जरूरी है कि हम भी इसका पालन करें और हम लोग जो है सामर्थ पे भर जाए। और तभी जो बाइबल में प्रेरितों के पुस्तक के 2 अध्याय वचन 17 में जो परमेश्वर का वादा है कि आत्मा जब हम पर उंडेला जाएगा, तब हमारे पुत्र और पुत्रियां जो है भविष्यवाणी करने लगेंगे, और हमारे युवा लोग जो है दर्शन पाएंगे, और बूढ़े लोग स्वप्न देखेंगे, तब ये वादा पूर्ण होगा। ये बहुत जरूरी है। Everyone in the congregation should have the gifts of the Holy Spirit. Some of the other gifts of the Holy Spirit should be there with them. Glory to God. Hallelujah. और कलीसिया के हर एक सदस्य में पवित्र आत्मा के वरदान 1 या 2 भी क्यों ना हो, लेकिन होने बहुत जरूरी है। Now let us come to the first century church model. What Jesus has given the commandment, the commission, commission to every disciples, every disciples. As I told you, in the early days when Jesus was speaking, huge crowd was following them and people were enjoying the fellowship of Jesus Christ. Many disciples were there. Many disciples were formed. People were following because also they were eating, the bread and the fish and all. Such kind of miracles Jesus was performing, and they were enjoying all such things. So a huge number of the followers were there, huge number of people were following there. But then Jesus has categorically separated, as I told you, sheep from the wolf. He has separated, and he has separated from the normal disciples, those who are only for the belly, and separated their real disciple. As today also many people are following churches only for their carnal things, with the carnal mind, only for their benefits, only for their belly, or only for their personal benefits. They are not following Jesus Christ as a real disciple. Glory to God. Hallelujah. Let us understand. Read book of John, 6th chapter, 26th and 27th verse. और हम जो है इस समय
पहले सदी के कलीसिया का इतिहास देखेंगे कि जो यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी, जो यीशु मसीह ने दिया हुआ आज्ञा था, उसका पालन उन्होंने कैसे किया। कि हमें पता है कि जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तब उनके पीछे चलने वाले कई सारे लोग थे और ये सभी लोग जो है उन्होंने चमत्कार देखे थे यीशु मसीह के हाथों होते हुए। उन्होंने देखा था कि किस तरह से रोटी जो है वो बहुतायत उसे मिली थी और वो बढ़ गई थी, बहुत सारे लोगों ने उसे खाया था। ये सब इन लोगों ने देखा था और इसलिए वे यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। लेकिन यीशु ने जो है भेड़ों को भेड़ियों से अलग कर दिया, उनमें फर्क किया, भेद किया। और उसी तरह से आज कलीसिया में भी कई सारे लोग हैं जो अपने शरीर के कामों के लिए कलीसिया में आते हैं, अपना पेट पालने के लिए, अपने खुद के मतलब के लिए वे कलीसिया में आते हैं। लेकिन हम जो है इसके बारे में अभी सीखने वाले हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्याय 6 और वचन 26। Read that in Hindi. उत्तर में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं खोज रहे हो कि तुमने आश्चर्यपूर्ण चिन्ह देखे हैं, बल्कि इसलिए कि तुमने भरपेट रोटी खाई थी। It means some people are becoming disciples only because of their belly, only because of their personal need, the material blessings. Only because of that they are becoming the disciples, and they start a church. They start a church. One man will start a church. One family, only husband, wife, and the son will start a church, and they call it as a church. We have already understood the church is not one man show. The church is not one person family show. It is not a private limited company. It is a group of people sitting together with all language group of people, all linguistic people from all ethnic background. As 120 people were sitting in the upper chamber, and then on the day of Pentecost, that means when they are receiving the Holy Spirit, that time only they have to start, establish a church. Here, these disciples were also only with the material blessing. So what happened? Jesus scolded them that you are following me not because you have seen certain miracles, you have experienced certain spiritual thing, but because of your belly you are following me. Read same chapter, book of John, 6th chapter, 60 verse. 60 and 60 verse. और यहाँ पर हम देखते हैं जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वह यीशु मसीह के चेले इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें भर पेट खाना मिलता है, उनका पेट भर जाता है, तो वो लोग चेले बन जाते हैं और वे कलीसिया शुरू करते हैं। एक व्यक्ति, एक परिवार जो है वह कलीसिया शुरू करता है। लेकिन हमने सीखा कि कलीसिया जो है वह किसी एक व्यक्ति का शो, एक व्यक्ति का कार्यक्रम या एक परिवार का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग इकट्ठा आते हैं जो आत्मा से भरे हुए होते हैं, तब कलीसिया जो है तैयार होती है। और ये कोई एक व्यक्ति जब करता है तब वह गलत बात होती है। और हम इसे और आगे पढ़ेंगे यूहन्ना से सुसमाचार के अध्याय 6 और वचन 60 में। Read in that particular thing in Hindi. यीशु के बहुत से अनुयायियों ने इन बातों को सुनकर कहा, यह शिक्षा बहुत कठिन है, इसे कौन सुन सकता है? In English it is there, many disciples therefore said, when they heard this, they said, this is an hard doctrine, who can bear it? So many disciples were there, not only the 12 disciples, but many more disciples were there. They were following Jesus Christ, and they were in the group, they were in the team, and they were eating bread and fish. And when Jesus was speaking this small doctrine, the small teachings, and then they said, no, we cannot follow this kind of teaching, this kind of doctrine. It is very hard. Glory to God. Read. Yes, tell. और यहाँ पर लिखा गया है कि कई सारे अनुयायी यीशु मसीह के, जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, केवल 12 चेले नहीं थे, उसके अलावा भी कई सारे लोग थे जो यीशु मसीह के पीछे रहे थे और वे चमत्कारों को देखते थे। यीशु मसीह के साथ वह रोटी और मछली खाते थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपनी सिद्धांत सिखाए, तब वे कहने लगे कि ये सारी बातें समझने के लिए मुश्किल है, उन्हें सुनना कठिन है, तो वह दूर चले गए। Number 66 you read, book of John, 6th chapter, 66 verse. वचन 66 में पढ़ता हूँ उसी अध्याय का।
इसी कारण यीशु के बहुत से अनुयायी वापस चले गए और फिर कभी उसके पीछे नहीं चले। From that point, many disciples became backslided. Many disciples became backslided. Only how many people left? The last 12. See, many disciples were there in the team of Jesus Christ, but then they became backslided because they could not abide under certain doctrines, certain teachings. And they said it is very tough. The last is only 12 disciples. Again, Jesus spoke to his disciples, 12 people. Read the next verse. और यहाँ पर हम देखते हैं कई सारे अनुयायी जो है वह यीशु मसीह को छोड़ दिए, उसे छोड़कर वह चले गए और केवल 12 लोग बचे, क्योंकि ये सभी लोग जो है यीशु मसीह ने जो सिखाई हुई बातें थी उन्हें सुन नहीं पा रहे थे, उन्हें पालन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वह चले गए। और देखते हैं हम आगे यीशु मसीह ने क्या कहा। फिर यीशु ने अपने 12 शिष्यों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? Glory to God. But then they told no. Anyhow, so try to understand. Many were there, but last separation, the filtration was done, and only the 12 disciples were left behind. Now, out of so many group of people, how many people were sitting in the upper chamber? 120 people only. 120 people were sitting in the upper chamber. There are many big crowd, were there, but only 120 people were sitting. And the first Pentecostal churches on the day of Pentecost started with these 120 people, and then again also more than somewhere around 500 people joined. So like this, the first century church started. Understand the meaning of the Pentecost. What is the meaning of the Pentecost? The meaning of the Pentecost is, if you just try to visualize, those days when, Moses and Aaron brought the chosen children, the Israelis, the Jews, from the Egypt, crossing the Red Sea, and came to the other side in the wilderness, and then they were walking towards the promised land, the land of Canaan. So on 50th day, they reached to a mountain called Mount Sinai, where Moses went in the mountain of Mount Sinai, and then he got the 10 commandments. He was with God, having fellowship with the God, and he came back with the 10 commandments. So the 50th day of the journey to the promised land is called Pentecost, the Pentecostal day. As we say, 4 is called, triple, 4 is called 4, 5, 6, 7, everything is called, penta, and all those different names are there. So the 50th day is called Pentecostal day. So on that day, on that Pentecostal day, the Pentecostal church started. That is the meaning of the Pentecostal church, where the promise, the 10 commandments from the Mount Sinai came to this earth planet through Moses. Glory to God. Hallelujah. और जब यीशु मसीह की बातें सुनकर कई सारे चेले जो थे उसे छोड़कर गए और आखिर में बचे हुए सिर्फ 12 लोग थे जो कि चुने हुए थे, तो ये जो है मानो ऐसे हो गया कि छलनी हो गई और जो नहीं चाहिए थे वह निकल गए और केवल 12 चुने हुए लोग रह गए। और जो कई सारे उसके पीछे चलने वाले लोगों का झुंड था, उसमें से केवल 120 लोग ऊपरी कमरे में रुके हुए थे पेंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा गिला गया। पेंतेकुस्त का अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, हम वो जानेंगे। उसका मतलब होता है कि जब मूसा और हारून जो है इस्राएल लोगों को मिस्र से लेकर चले थे, रेगिस्तान से वह गुजर रहे थे, उस समय 50वें दिन जो है वह सिनाई के पर्वत के पास आए, जहां पर मूसा ऊपर गया और उससे परमेश्वर ने मुलाकात की उससे और उसे 10 जो है आज्ञाएं दी थी। और उस समय जो है ये पेंतेकुस्त का दिन दर्शाया गया, जिसका मतलब है 5वां दिन, जो कि जैसे 1, 2, 3 ऐसे 5 है, उसे पेंटा कहा जाता है, उसे पेंतेकुस्त का दिन कहा जाता है। और उसी दिन पवित्र आत्मा जो है यीशु मसीह के चेलों पर डेला गया और उन्हें जो है पवित्र आत्मा मिला और कलीसिया का जन्म हुआ था। Glory to God. Now we are going to conclude this episode with a word of prayer.